Good evening to all of you. Is this audible? Visible? Am I audible? Visible? All clear? कौन चलथिला? Yes, very good, Soumya. तो लास्ट क्लास रे कौन डिस्कस करथिले हमें? लास्ट क्लास रे किछि इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर हमें ऑलरेडी डिस्कशन करथिले. आज आउ किछि इंपोर्टेंट टॉपिक को आसीबा. Yes, all clear. बढ़िया. आज कौन टॉपिक अच्छे? आज मोर हमर टॉपिक ऑफ डिस्कशन अच्छे आज रो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. कौन अच्छे? Human resource development. Now, what is human resource? And what do you mean by human resource development? What is human resource and what do you mean by human resource development? Human resource कहले हमें कौन बुझते? Human resource कौन? What is first? What is a resource? Resource कौन? What do you mean by a resource? What do you mean by a resource? Resource which satisfies human want. Which satisfies human want. जी human want satisfy करे हमें ताको resource बोली कहूँ. बुझे ना? Which satisfy जे human want satisfy करे ताको हमें resource बोली कहूँ. तल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहीं की आवश्यकता अच्छी हमको? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रा आवश्यकता कहीं ना टू गेट द फुल पोटेंशियल ऑफ to get the full potential of the economy. To get the full potential of the economy, to use the best, means fullest potential of the economy best use by the some goods, those are want, yes, those are which are want of every human, correct. Somewhere. So to get full potential of economy, to get the full potential of the economy. How कौन पे HRT को यूज करछे ना? टू इंक्रीज द जीडीपी, to increase the GDP or to increase the growth rate, to increase the growth rate, to increase the GDP. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट को हमें बढ़ी परिया, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ी परिया हैला. इकोनॉमिक डेवलपमेंट करि परिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करि परिया. एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंक्रीज करि परिया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को इंक्रीज करि परिया. नाउ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रो अर्थ होउची हमें एई एस्पेक्ट ऊपर देखिबा, एई एस्पेक्ट को हमें डेवलप करबा, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. तो आज रो क्लास रे मु डिस्कस करबी किछि इंपोर्टेंट पॉइंट, जेमति कि अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो इन ओडिशा, गिग इकोनॉमी कोन, पीएलएफएस वुमेन एंड पार्टिसिपेशन, पीरियडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, स्किल डेवलपमेंट, किछि इनिशिएटिव्स, ए इंपोर्टेंट पॉइंट मानक ऊपर हम डिस्कस करबा. नाउ लेटेस्ट डाटा, आई विल शेयर सम लेटेस्ट डाटा
economics related data of the government of Odisha, which will be helpful for your mains examination. Mains exam pai ji help kariyo mu sei related topic ko discuss kariyo. So latest government data on unemployment in Odisha, you go periodic labor force participation PLFS anusare and Odisha economic survey 2024-25, it shows positive trend with a decline in unemployment rate. ताले हमको positive trend कौन देखियो मिलुची Odisha context रे. Now there is decline in unemployment rate ता decline होची. देखो latest government data कौन कहूची Odisha रे for person aged 15 years and above, it was 3.2% in 2022-23, which is lower than national average 3.9. National average unemployment rate kete? National average 3.9, Odisha it is 3.2. Ko mana ko pai na for the person above the age of 15. Urban unemployment, it is around 4% for both male and female. It is around 4% for both male and female. Labor force participation rate in Odisha, it was 61.3% for persons aged about 15 and above. And the national average 57. National average 57, but it is 61 labor force participation rate. Now, labor force, more the labor force participation rate, that is good for the economy. Please understand. More the labor force participation rate, that is good for the economy. यार अर्थ यार मीनिंग कौन कौन लिखो ओडिया लिटिल अपन को इकोनॉमिक्स पढ़ेवा स्टाइल बहुत भला ठीक है थैंक यू now सब notes पढ़ेवा everything is for you only for you to make you competent to qualify the examination. So exam qualify कर that's all. देखो कितने important relate current data मु देइछि एठी labor force participation rate ओडिसा रे 61.3 तमाने more the rate more this is good for the economy. And youth unemployment 15 to 29 years in Odisha, it is 15.9% in 2025. So this is above the national average. This is lower than several others. Rural unemployment rate, it is declined for 54,000 in 2021-22 to 36 per thousand in 2022-23. It decline 54 ru decline करके 36 per thousand. ताले हमें व्हाट इज द प्री ट्रेंड जो डाटा देखैली तार समरी कोन जति कि डाटा हमें डिस्कस कले से डाटा र समरी कोन कहू जे डाटा कुछ ओडिसा रे देयर इज अ स्टेडी इंप्रूवमेंट इन लेबर मार्केट कंडीशन स्टेडी इंप्रूवमेंट इन द लेबर मार्केट कंडीशन बोथ रूरल एवं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हिच बोथ रूरल एवं अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हिच The state government has released significant fund for employment generation and skill development, contributing to these improvements. State government released significant fund for employment generation and skill development. Now these are the key trends in Odisha. Any doubt on this? तो Odisha उपरे किसी important specific topic पचारुछि लिखियो internal security topic. Most of the internal security topics I think I have dealt with पढ़ाई मो क्लास यदि आउ किछि बाकी थिबो मे बी आसीबो इन फ्यूचर एबे चली छि बोले मुख्य बैच रे इंटरनल सिक्योरिटी पूरा डिटेल डिस्कशन डिटेल क्लास चली छि मुख्य बैच रे डिस्कशन चली छि पूरा डिटेल पढ़ा जिवो इंटरनल सिक्योरिटी पूरा कवर करी now जो डाटा देली ये डाटा को कोड यूज करिवे now whenever you are writing about the Odisha economy को तो ओरिएंटेशन दउछन Odisha economy ऊपर तो लिखुछन एठी या पर डिस्कशन करिवे सी जगह रे देखिए नेक्स्ट हम देखिए फीमेल मेल सेक्स रेशियो now sex ratio condition देखिबा Odisha context sorry all India context what is the cause for low female to male ratio what is the cause for low female to male ratio
What is the cause for low female to male ratio? This is known as gender বা sex ratio বলি কোয়া যায়. Why sex ratio is low? Naturally, please remember, naturally less female are born as compared to male. It is a natural phenomenon. Less female born as compared to male. Point number one. Point number two, there is female ferticide, infanticide, female infanticide, female ferticide, female infanticide, female infanticide ferticide कारण ऑटोमेटिकली फीमेल पॉपुलेशन टा ड्रॉप करी जाउची. सेति पई कोन होती ना फीमेल पॉपुलेशन टा ड्रॉप करी जाउची. ये दीटा होते मेजर कॉज हैला. Nutrition health deprivation against women and female child. Now is it true? Nutrition and health deprivation against female child कोन एटा? Nutrition and health deprivation against women and female child. Is this true? Yes, true to some extent. Nutritional deficiency is there. Female child is neglected. Women are neglected. They have less quality to education. No, for women. Failure of administration in full-fledged implementation of strict rule against female ferticide. There is PC-PNDT Act. So PC-PNDT Act थिबा सत्वे PC-PNDT Act थिबा सत्वे female ferticide increase ही जाउछ. Around 58% of total population is based on agriculture. Now, India जदि हम देखिया proportion of poor is more. High incidence of poverty is there. So जेहेतु high incidence of poverty is there, ताले एमाने कौन चाहते हैं? एमाने चाहिए more number of children. More children are the source of income. More children are the source of income. है ना? Okay. Now जो हम female to जो FMR और CSR child sex ratio देखुचे एवं female to male ratio देखुचे. Female to male ratio CSR आपको overcome केमती कर पाएगा? There are different initiatives. So many states government provides financial assistance to girl child to complete their schooling. Schooling complete करिया पाई government provides financial assistance to girl child. Various scholarship programs are run by the government. Only girls can avail such assistance. For example, Kanyasri scheme in West Bengal. Other government of India schemes for women include Beti Bachao Beti Padhao, One Stop Center scheme, Swadhar Grah scheme, राष्ट्रीय महिला कोष, राष्ट्रीय महिला कोष. So these are different schemes run by the government. ताले कौन कहली? Okay, बुझे गला? एति क्लियर? एति क्लियर? No doubt. लिखि पारिबो या पर क्वेश्चन आसले. नेक्स्ट यदि हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करिया पई चाहूचे, हमको डेवलप करिया पड़िबो कोन? ना स्किल डेवलपमेंट. What you need? You need skill development. Skill development. Now, को skill development रा आवश्यकता कोन? हमें कहते job creation होनी. Now, job creation होनी is not actually the problem, but there is certain demand by employer. There is certain demand by employer
ହେଲା and supply by किए दो there are certain demand by employer and supply could दो employee some supply from employee supply from employee तो एम्प्लॉयर जो डिमांड कौन कर ना एम्प्लॉय डिमांड कर जो स्किल एठी कौन से स्किल मिलु देयर इज स्किल डेफिसिट देयर इज स्किल डेफिसिट बुझिला तो जॉब क्रिएट होनी दैट इज रॉन्ग जॉब क्रिएशन इज देयर इन द इकोनॉमी बट जॉब क्रिएशन अनुसार जो स्किल दरकार दो स्किल्स आर नॉट अवेलेबल those skills are not available so there is lack of skill कमी जाउची तो ये पॉइंट को मासिबी नाउ आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट को आछी गिग वर्कर्स व्हाट इज गिग वर्कर ना गिग वर्कर इज ए न्यूज सुनि जंदी कि नहीं व्हाट डू यू मीन बाय गिग वर्कर व्हाट डू यू मीन बाय गिग वर्कर गिग वर्कर कौन सुनिछो गिग वर्कर ना there are two terms used platform workers and gig workers जोटा ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप थिला गोटे लोक जीव जनक पाखे जॉब करिवो ता बदले ताको दरमा मिलिवो पीएफ ईपीएफ जहाँ मिलिया कथा मिलिवो अदर अलाउंसेस मिलिवो which beyond that allowances and beyond that relation a new work is created जहाँ को प्लेटफॉर्म वर्क बोली कहा जाउछ so they will serve as per the requirement they will serve employee will serve as per requirement employee will serve as per requirement employee will serve as per requirement and employee will serve as per requirement and will be paid and will get salary as per requirement salary or remuneration as per कौन कुछ एम्प्लॉय विल सर्व एज पर रिक्वायरमेंट जति के दरकार वो प्लेटफॉर्म वर्कर को माने ना एग्जांपल ओला उबर स्विगी जोमेटो जो माने काम प्लेटफॉर्म वर्क किए मु कहली ना ओला रे जो माने अछंदी उबर स्विगी रे जो माने काम कले जोमेटो रे जो माने काम कले so employee will serve as per the requirement जति कीटा डिलीवरी करिवो से अनुसार छि पैसा पाइबो फ्लिपकार्ट डिलीवरी अमेज़न डिलीवरी फ्लिपकार्ट डिलीवरी कथा को डिलीवरी बॉय जो माने ना एठी कंपनी को बेनिफिट कौन बेनिफिट कंपनी को भी अच्छी एम्प्लॉय को भी अच्छी एम्प्लॉयर को भी अच्छी बेनिफिट का अच्छी एम्प्लॉय को अच्छी एम्प्लॉयर को अच्छी एम्प्लॉयर को कौन बेनिफिट एम्प्लॉयर होची नो फुल टाइम पेमेंट ओनली रिक्रूटमेंट ड्यूरिंग केते बेले रिक्रूटमेंट केते ओनली रिक्रूटमेंट इज ओनली ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट जेतल दा दरकार से नै जो अदरवाइज बाहर कर दो ना एम्प्लॉय को लाभ कौन बेनिफिट एम्प्लॉय को कौन ना
he can work for more than two platform, more than one platform simultaneously से एक रु अधिक रे काम करि पारे ना more income opportunity, more income opportunity मानकर income opportunity एठी अधिक बुझिला इज दिस क्लियर बुझिला बेनिफिट ना साइमल्टेनियसली प्रॉब्लम भी अछि एठी कोन एठी प्रॉब्लम कोन इश्यूज कोन चैलेंजेस कोन जो माने गिग वर्कर अछन दे डोंट रिसीव एनी सैलरी नो सैलरी माने फिक्स सैलरी नो फिक्स सैलरी आउ कोन प्रॉब्लम गिग वर्कर नो सोशल सिक्योरिटी नो सोशल किसी सोशल सिक्योरिटी नहीं लाइक पीएफ ईएफ पेंशन किसी नहीं पेंशन नो हेल्थ सिक्योरिटी लाइक इंश्योरेंस ये सब किसी दो बुझेला व्हाट आर द चैलेंजेस ना बुझिबुन बुझेला चैलेंजेस कोन प्रॉब्लम कोन बुझेला ना नो जॉब सिक्योरिटी आल्सो बाहर भी कर दे पारे केतोल देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी इज दिस क्लियर बेनिफिट और कोन ये कोन now what are the issues faced by gig workers कहली already there is lack of job security there is irregular wage uncertain employment status denial of workplace protection contractual relationship no काम प्रेशर अधिक नहीं वर्क प्रेशर इज मोर हठात काम दे दे अधिक काम दे दे सो वर्क लाइफ बैलेंस करबा इट इज difficult to maintain work life balance out point difficult to maintain work life balance है ना next what are the recommendation of NITI Aayog for development what are the recommendation of NITI Aayog for development NITI Aayog रो recommendation कोन है first ये कहते हैं first estimate the gig workers proper estimation of gig workers maybe through periodic labor force participation बा national sample survey organization data को भी डाटा नहीं कि first देखो कितने gig workers अछन how many gig workers present catalyze platformization माने कोन platform India initiative like startup India simplification hand holding session ए मानक पय जवन different platform रे अछन skill development of platform jobs जवन platform job रे अछन सन पय कोन दरकार ना skill development करी these are the recommendations so in India gig economy is rising मु कहली already this is a temporary or short period work contractual freelance type of work like your Fiverr Upwork नहीं Fiverr Upwork LinkedIn या माध्यम रे बहुत गुडे जॉब मिले but these jobs are temporary in nature these jobs are temporary in nature बुझेला gig economy कोडी better performance करछ ना टेक्नोलॉजी कंटेंट क्रिएशन सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्युनिकेशन फूड बेवरेज
ओला उबर जोमाटो स्विगी एगुड़ा कहली ऑलरेडी यही जगह गिग वर्कर्स अधिक काम कर बेनिफिट कौन व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गिग वर्कर मत कहले एटी जो माने एई फील्ड रे काम करूछन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब इज देयर एनी बेनिफिट किसी बेनिफिट्स माने पाउछन कि आर दे गेटिंग एनी बेनिफिट को आर दे गेटिंग एनी बेनिफिट एमानु किसी बेनिफिट अछि आर दे गेटिंग एनी बेनिफिट आर दे गेटिंग एनी बेनिफिट yes what is the benefit here now, there is access to highly specialized workforce those who are specialized they are working here so there is access to highly specialized workforce no hassle of notice period no training notice period ये सब कुछ नहीं hassle free they are getting what are the benefits Saroj there is it is access to highly specialized workforce no hassle of notice period or training timeline and milestone based efficient work by gig workers timeline and milestone based efficient work by gig workers timeline based means एतिक टाइम भितर एतिक काम सारे देखुना जो माने ये जो पिज्जा डेलीवरी दौरान 10 मिनिट्स ना 15 मिनिट न देले जीव मागणा सो हाईली स्पेशलाइज वर्कफोर्स नोटिस पीरियड किसी ना एटू छाड़ी के सेठी जॉइन कर परिबे सेठी छाड़ी सेठी जॉइन कर परिबे है ना टाइमलाइन एंड माइलस्टोन बेस्ड एफिशिएंट वर्क नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस हाई एट्रिशन रेट एट्रिशन माने कोन जॉब चेंज poor level of loyalty on part of workers because जेहेतु कंपनी किछि कोन सिक्योरिटी सिस्टम रखिनी वर्कर कहीं लॉयल्टी देखियो देयर इज नो लॉयल्टी बाय द वर्कर there is no loyalty by the worker there is vulnerability of workers in terms of removal from work by employer without any notice no retail benefits poor working condition now coordination it is a big challenge more chances of leakage of confidential information or strategy by the freelance consultant जी फ्रीलांसिंग काम करछि से कंपनी चेंज कर देले कोन हो इन्फॉर्मेशन दे दो then because he has no loyalty towards that platform खाली पैसा रोजगार करिया पई काम करछि नो इमोशनल कनेक्शन हैला बुझी गला ना डाउट बुझी गला ना डाउट यदि अछि को गोटे रिपोर्ट आसले 2021 रे अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ गिग इकोनॉमी हैला एक millions of jobs will be created by 2028 in non-farm sectors. NITI Aayog got a report on India's booming gig and platform economy. This report provides scientific methodological approach to estimate current size and job generation potential of the gig economy. 2020 रे 77 लाख workers they were engaged in gig economy. 2.6% of non-agricultural workforce and 1.5% of total workforce in India. So the gig workforce it is expected to expand
to 2.35 crore workers by 2029-30. 2029-30 देखो ये कितने expand करे. There will be 6.7% of non-agricultural workforce, 4.1% of total livelihood in India by 2029. Now this data jaha dechi, all the data are very very important. Please remember. এই ডাটা লিখিলে হি মার্ক মিলিব, মেন্স अधिक মার্ক পাইবে। এবং প্রেজেন্টলি 47% gig workers medium skilled job, 22% high skilled, 31% low skilled job. So medium skill gradually declining, low skilled high skilled increase होची. But problem कौन? मैं already कहली कि there is no regulation to protect these freelance employees in India. So there is a need for proper government intervention to tackle the emerging issue in this rising gig economy. है इस क्लियर gig economy पर लिखिए वो लिख पारिबो क्वेश्चन दे दोची. What do you mean by gig workers? Discuss potential of India's gig economy. One will discuss potential of India's gig economy. Simple question. Question लिखिए वो लिख पारिबे समझते. Next. Demographic dividend. Now what is demographic dividend? What is demographic dividend? Demographic dividend ର ଅର୍ଥ କଣ? Any idea? अरे पढ़ीच पूर्व सब पढ़ेची को पढ़ेच गुड़ा कौन मो जो मन को एज ब्रैकेट 15 रु 15 रु 64 इयर्स भीतर अछि. ए यंग पॉपुलेशन पे याको कोन कहै? दिस इज नोन एज यंगिस्तान. कौन को जाको यंगिस्तान. इंडिया हिंदुस्तान इज नोन एज यंगिस्तान. हिंदुस्तान इज नोन एज यंगिस्तान. बुझिरा
तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड अच्छी आपको जब हमें प्रॉपर्ली यूथ पॉपुलेशन आपको यूज न करबा देन दैट विल बी टर्न टू डेमोग्राफिक डिजास्टर डेमोग्राफिक डिजास्टर अर्थ डेमोग्राफिक डिजास्टर अर्थ कौन करिवे माने ना माने सोशल मीडिया अब्यूज ड्रग अब्यूज सोशल मीडिया अब्यूज ड्रग अब्यूज एंटी सोशल एलिमेंट मान सहित मिसवा LWE इंसर्जेंट ग्रुप्स है ना टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बुझिला तो ताले हमको कौन दरकार ना वी नीड टू प्रोटेक्ट द डेमोग्राफिक डिविडेंड यदि हम प्रोटेक्ट न करबा दैट विल बी टर्न इनटू डेमोग्राफिक डिजास्टर हैला सो दिस इज द इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल नाउ इकोनॉमिकली हम एटू बेनिफिट केमति पाया फ्रॉम दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड 15 रु 64 वर्ष जो कौन कौन बेनिफिट पाया ना फर्स्ट बेनिफिट इज देयर इज मोर डिमांड सेमान को डिमांड अधिक बा कंजप्शन अधिक मोर कंजप्शन देयर इज मोर कंजप्शन फर्स्ट सेकंड एम्प्लॉयमेंट कौन मिल पारिबो एठी ना एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी अछि एम्प्लॉयमेंट मिल पारिबो हला कौन कहली एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी अछि एम्प्लॉयमेंट मिल पारिबो आउ कौन मिलिबो आउ कौन बेनिफिट ना डिपेंडेंसी कम हो डिपेंडेंसी कम हो बुझिए गला मो कथा these are the benefits young population अधिक रहिले youth population अधिक रहिले these are the benefits we will get चलो so demographic dividend will lead to accelerated economic growth it will lead to accelerated economic growth and improvement in living standards now what are different phases of demographic dividend so direct question for you what are different phases of demographic dividend first is declining birth and death rate now first phase declining birth rate भी decline करछि death rate भी decline करछि now it benefit कौन now it decline kahi करछि there is a decline in infant mortality rate because there is better health care and living condition followed by a decrease in fertility rate increasing workforce increase करियो कहली aging population reduce हे जो ताले इको बेनिफिट कोन ना प्रथम कथा लेबर सप्लाई मिलियो इंक्रीज लेबर सप्लाई सेविंग्स बढ़िबो इन्वेस्टमेंट बढ़िबो कंजप्शन मध्ये एटी अधिक इट विल बूस्ट ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेबो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेबो जेंडर इक्वालिटी इंक्रीज हबो दीज आर द बेनिफिट्स हैना ताले मुख्य कथा होची डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम यूटिलाइज केमति करियो हाउ टू यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रॉपर कौन कहली क्वेश्चन होची वर्तमान हाउ टू यूटिलाइज द डेमोग्राफिक डिविडेंड प्रॉपर एको हमें प्रॉपर्ली यूटिलाइज केमति करियो एनी आंसर this make it more conversational this make it more conversational
याको बेनिफिट आर हम केमती उठे परिया फर्स्ट पॉइंट जदि हम जॉब क्रिएशन करूचे अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कौन कहले अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज availability of employment opportunities. Next is quality education and skill development. Quality education and skill development. A well educated skilled workforce it is required. So STEM education, science, technology, engineering, medical education बढ़ी परिवे. Digital literacy rate बढ़ी परिवे. है ना? Healthcare better healthcare provide करी परिवे. We can provide better healthcare services. These are the benefits. Gender equality. You can empower women through education. Economic policy, better economic policy. Better economic policy, governance and institution, good governance, efficient institution, urbanization, public service. No, ये सब point लिख पारे. Now, what are the challenges of demographic dividend in developing countries? What are the challenges of developing? What are the challenges of demographic dividend in developing countries? Dita country ऊपर हमें most specifically discuss करें. One is India and Sub-Saharan Africa. Now, India currently experiences demographic dividend around 65% population under the age of 35. 65% population India 35. तब भाव कितने young population India अच्छा. So without that, but यदि job creation ना हुए, skill development ना हुए, youth unemployment ना बढ़ी जाए. Sub-Saharan Africa, many countries in Sub-Saharan Africa, they are undergoing demographic transition, but high unemployment rate it देखिए poor infrastructure, inadequate healthcare facility. So youth population खाली रहिले हबनी, खाली demographic dividend टा रहिले हबनी. You have to use that demographic dividend in a proper way, better manner रे use करिया पड़ियो. बुझिला? Is this clear? ठीक है. बढ़िया. ताले कौन करबे demographic dividend? It conclusion लिखियो कौन ना? It offers unique opportunity, but यदि हमको आपको डेवलप करियर अछि कौन करिया? To develop it, strategic investment required, education, health, infrastructure, job creation दरकार. ହେଲା. Demographic challenges आपको बढ़िया पड़ियो ना. एतिक लिखी ओवर करियो. Conclusion लिखी. चला. ହେଲା. This is how you have to write. So मैं already कही छी intro body part now देखो ये conclusion को भलिया अछि. Conclusion is always futuristic. It is always futuristic, or it is always solution centric. This is always solution centric. Next, epidemiology and paleodemography. Epidemiology direct question आसे. Epidemiology कहले हमें कौन बुझे? What is the meaning of epidemiology? ये direct question आसे सवाल. Epidemiology कौन? What do you mean by epidemiology? What do you mean by epidemiology? देखो study and analysis of distribution कौन ना? Who, when and where pattern and determinants of health and disease condition. For a defined population रे in a defined population आमे देखुचे कौन ना? Disease pattern, who, when and where ए factor गुड़ा को देखुचे.
who, when, and where pattern and determinants of health and disease condition. It is defined in population. Now, epidemiology ro function kono na it will collect data and statistical analysis. So epidemiology helped to develop methodology used in clinical research. कौन कहली methodology used in the clinical research बुझिला. Now what is digital epidemiology? Digital epidemiology रे हमें कौन देखुचे ना सिंपल कथा एठी ट्रेडिशनल एपिडेमियोलॉजी रे पब्लिक हेल्थ ऊपर डिस्कस होतला बट टेक्नोलॉजी यूज होनतला. बट इन डिजिटल एपिडेमियोलॉजी वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड हियर. कौन कहली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज यूज्ड हियर. So traditional epidemiologists say it is a field founded on the pillars of science. So data is mostly collected by field staff through the house to house survey. ये data एमती collect करा जाए and then it is processed. Now paleodemography. Paleodemography कौन? What is paleodemography? एठी ये कुछ human population of past को हमें analyze करिवा by taking certain samples. कौन कहली here we will reconstruct past population structure using samples of human skeleton, either freshly excavated or stored in museum collection. Paleodemography, it is the description and explanation of biological adaptation, mortality, fertility, migration pattern of prehistoric population. जो हिस्ट्री नथला प्रीहिस्टोरिक पॉपुलेशन नो पैटर्न गुडा को ये डिफाइन करूची. माइग्रेशन कोटू करथले क्वाड करथले काहे की करथले, मोर्टालिटी कोन थिला, फर्टिलिटी रेट कोन थिला, अडाप्टेशन केमति थिला बुझिला, अडाप्टेशन केमति थिला. So पूर्वरु ancient time period earlier paleodemography was mostly dependent on कहाँ पर डिपेंड करना, it was mostly dependent on the bioarchaeological evidence. Bioarchaeological evidence माने जोड़ा को bone material evidence. But now it is based on DNA and isotope evidence as well. Isotope evidence जोड़ा तुम्हारो कार्बन 14 साइंस रिपोर्ट थी वो यूज करा जाए. कार्बन डेटिंग को जाए जहाँ को कार्बन डेटिंग, यूज ऑफ C14 isotope, use of C14 isotope. बुझिएगला गोटे क्वेश्चन आउ तार आंसर एटी दे दीची निजे पढिबो. व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड एंड इट्स इंपैक्ट ऑन द इंडियन इकोनॉमी. डेमोग्राफिक डिविडेंड रो डेफिनेशन लिखिबो एवं इंडियन इकोनॉमी पर इंपैक्ट लिखिबो. डेफिनेशन ले कोन लिखिबो, यूएन पॉपुलेशन फंड UNFPA जोड़ा करछि इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल दैट कैन रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन अ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर. सो वर्किंग एज पॉपुलेशन 15 रु 64. ना बेनिफिट कोन लिखिबो ना, इन्वेस्टमेंट. सेकंड इट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड जॉब क्रिएशन. इन्वेस्टमेंट बढ़िबो, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िबो. स्किल एनहांसमेंट, ट्रेनिंग हैला, हाईली एजुकेटेड लेबर फोर्स हमें सप्लाई करि पारे. Demographic dividend बढ़िले we can increase or we can have highly educated labor force. Is this clear or any doubt? Go. Is this clear or any doubt? Is it doubt? Clear? बहुत बढ़िया. ताले कौन पढ़िले हम आज टिके ओवरऑल देखि दो को टॉपिक डिस्कस कली. बहुत टॉपिक आज पढ़ाई छी, बहुत टॉपिक कवर करछि आज. निजे पढ़िवा को नल किछ बुझ परिबन. फर्स्ट डिस्कस कली अबाउट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड ऑल दोस इन इंडियन इकोनॉमी. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थिला टॉपिक. तापर आसिला हम गिग वर्क सेक्स रेशियो डिक्रीज काहे की होची. देन डिस्कस कली गिग वर्कर्स ऊपर हैला, गिग वर्कर्स डिस्कस कली.
gig workers of benefit कौन loss negative point कौन recommendation by NITI Aayog very important you have to write about the recommendations given by NITI Aayog ये point न लिखिले mark पाइबेनी then discuss कली about demographic dividend कौन benefit होला demographic disaster हेले कौन हबो key phases of demographic dividend discuss कली challenges of demographic dividend India रे कौन discuss कली conclusion epidemiology paleodemography digital epidemiology एतिकी point discuss कली है ना बुझिए गला दिस क्लियर ताले कौन देखिए periodic labor force participation gig workers है ना gig workers देखिले आ कौन demographic dividend paleodemography these are the points we discussed ठीक है आ जहाँ जे पूर्ण देखियो आमे नेक्स्ट क्लास एतिकी पढ़ी के आसी क्लियर एतिकी पढ़ी के आसन तो आ जहाँ जे नेक्स्ट क्लास देखियो ऑल राइट दैट्स ऑल फॉर द सेशन थैंक यू गुड नाइट पुणी काली क्लास रे आ देखियो थैंक यू